Hello everyone, it's the second class of CPC and in this class we'll try to understand the various terms used in the Code of Civil Procedure 1908. These are very frequently used terms in civil procedure and are very essential to be understood. क्योंकि अभी हमने CPC का आगाज किया है, अभी हमने CPC को पढ़ना और समझना शुरू किया है and we are trying to understand its basics. So let's start today's class and understand all these terms one by one. Okay, so the first term for today's class is cause of action. Cause of action. COA. So the cause of action is the pivot of the suit. It is the center of the suit. मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि कॉज ऑफ एक्शन पूरे के पूरे सूट का केंद्र बिंदु होता है, सेंटर होता है, पाइवट होता है. एंड द एंटायर सूट इज ऑन द कॉज ऑफ एक्शन. इफ यू हैव अ कॉज ऑफ एक्शन देन ओनली यू हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट, टू इनिशिएट द सिविल प्रोसीडिंग्स. अदरवाइज यू हैव नो राइट. अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है तो ही आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो. इट मींस कॉज ऑफ एक्शन इज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट. इट इज अ राइट टू इनिशिएट द सिविल प्रोसीडिंग. ये एक राइट है सिविल सूट फाइल करने का. दिस टर्म कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंस में एंड इन स्टेट्स लाइक यूपी जहां पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डायरेक्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन. एंड बिकॉज यू डू नॉट नो the components of the cause of action, you do not know that how to describe, how to explain cause of action, आप कंफ्यूज हो जाते हो. इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है, what do you understand by cause of action? cause of action से आप क्या समझते हैं, समझाएं. और वहां पे आपको नहीं आता है समझ में कि किस तरह से एक्सप्लेन करें cause of action को. cause of action means the existence of a civil right and the violation of the same by another person. The person whose civil right is violated gets a right to initiate a civil proceeding or to institute a civil suit against that person who has violated your civil right. Civil right means the right which has been conferred by the law, which has been given by the law. Cause of action का मतलब है civil right का existence और उसका violation, उसका infringement. जिसने इसका वायलेशन किया है सिविल राइट का, आपके पास एक सिविल राइट है और किसी पर्सन ने उसको वायलेट कर दिया है, उसको इन्फ्रिंज कर दिया है. क्योंकि किसी पर्सन ने आपके सिविल राइट को वायलेट कर दिया है, इन्फ्रिंज कर दिया है, तो आपके पास अधिकार आ जाता है, राइट आ जाता है उसके अगेंस्ट सूट फाइल करने का, सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का. सो cause of action means the existence of the civil right and its violation. Existence of a civil right and its violation. Civil right means a right which is conferred by the law, which is given by the law. गिवन बाय लॉ. जो लॉ ने आपको राइट दिया है. एंड इट्स वायलेशन. यू हैड अ सिविल राइट एंड इट हैज बीन वायलेटेड, इट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड बाय अनदर पर्सन. सो you've got a right to institute a civil suit against that person who has violated your civil right. This civil right and its violation, these two are the components of a cause of action. ये दो components are cause of action के. Civil right means a right which has been conferred by law, which has been given by law. Now who will prove? आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, आपने सूट फाइल कर दिया है उस पर्सन के अगेंस्ट. Then who will prove that you had a cause of action and it has been violated by that person whom you are alleging in the court that this person has violated your civil right? इसको प्रूव कौन करेगा कि आपके पास एक सिविल राइट था और इस पर्सन ने
जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इसने इसको वॉयलेट किया है, इसने इस सिविल राइट को तोड़ा है, इसको इन्फ्रिंज किया है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन whom? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? नाउ हियर कम्स अनदर टर्म, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? इस चीज को प्रूव करने का कि आपका एक सिविल राइट था और इसने इसको वॉयलेट किया है। Part 3 of Indian Evidence Act 1882, Chapter 7. It contains Section 101 to Section 114. Part 3 में अगर आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वहां पे चैप्टर 7 में 101 से लेके 114 तक सेक्शंस हैं। These sections contain the provisions related to the burden of proof. Part 3, Chapter 7, Section 101 to Section 114. Part 3 of Indian Evidence Act 1882, Chapter 7, it contains Section 101 to Section 114. Burden of proof के बारे में बात करता है। Section 101 of Indian Evidence Act, Section 101 of Indian Evidence Act 1882, Burden of proof बताता है क्या होता है और किसके ऊपर होता है। Whoever, now Section 101 reads as, Section 101 में Section 101 में क्या लिखा हुआ है? It reads as, whoever desires that any court to give judgment as to any legal right or the liability dependent on the existence of the facts which he asserts must prove that these facts or those facts exist. And when a person is bound to prove any fact, the existence of any fact, it is said that the burden of proof is on that person. Section 101, Section 101 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जो भी चाहता है कि कोर्ट जजमेंट पास करे उसके फेवर में, और उसका लीगल राइट या फिर लाइबिलिटी डिपेंड करता है उन फैक्ट्स पे जो कि वो असर्ट कर रहा है, वो बता रहा है कोर्ट को, तो उस पर्सन को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। जो पर्सन चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, जो कह रहा है कि लीगल राइट और लाइबिलिटी इन फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव एनी फैक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, it is said that the burden of proof is on that person. Section 101 of Indian Evidence Act. It says, Section 101 of Indian Evidence Act 1882, burden of proof. It reads as, whoever desires that any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. Section 101 of Indian Evidence Act क्या कहता है? Whoever desires, जो भी ये इच्छा रखता है, जो भी ये चाहता है, that any court to give judgment,
कि कोर्ट जजमेंट दे उसके फेवर में। एज टू एनी लीगल राइट और द लाइबिलिटी, मैंने आपको बताया था दैट substantive law determines the legal right and the liability. So civil right is a legal right because it is conferred by the law, it is given by the law. Civil right क्या होता है? Civil right वो होता है जो कानून ने आपको दिया है, जो लॉ ने आपको दिया है. So it means it is a legal right. So the existence of a legal right and its violation, that is what the meaning of cause of action. So whoever desires that any court to give judgment as to any legal right or the liability dependent on the existence of the facts, ये जो लीगल राइट है या फिर जो लाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस चीज पे? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स पे एग्जिस्ट करती है, उन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है विच ही असर्ट्स, जो कि वो खुद बता रहा है कोर्ट को. ही मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. और ये आगे है इसमें, when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof is on that person. When a person is bound to prove the existence of any fact, जब एक पर्सन को बाउंड किया जाता है कि आपको ही प्रूव करना है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है. सो सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग, when a person files a civil suit against another person alleging that this another person has violated my civil right, then he himself will have to prove before the honorable court that he had a civil right which is conferred by the law, which is a legal right, and he himself will have to prove that this another person has violated his civil right. तो उसको खुद से ये प्रूव करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं कोर्ट में जाके कि मेरा सिविल राइट था और ये वॉयलेट कर दिया किसी अनदर पर्सन में, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, लेट्स सपोज हिज नेम इज राहुल, और मैंने राहुल के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन मी दैट आई हैड अ सिविल राइट which has been violated by this person whose name is Rahul, and because my civil right has been violated, it has been infringed, I have got a cause of action to institute a civil suit against Rahul. It means I have got a cause of action to institute a suit against Rahul. मुझे खुद से प्रूव करना पड़ेगा, right? So cause of action is the existence of a civil right, existence of a legal right and its violation. Civil right is a right which has been conferred by law. It means it's a legal right. It must be a legal right. मैंने बताया आपको कि cause of action, the components of cause of action are civil right and its violation. Civil right, it's a legal right, because civil right is a right which is given by the law, which is conferred by the law, which is given by the law. It must be a legal right. So the burden of proof lies on the person who has instituted a civil suit, जिसने सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया है, who has initiated the civil proceeding, जो बोल रहा है कि मेरा सिविल राइट वायलेट हुआ है, right? So let's understand this,
with an example, A has a house. A का ये घर है, and A is an absolute owner of this house. He is an absolute owner of this house. This is a street. This is a street to reach to the house. ये गली है मान लेते हैं. ये घर है और इस घर का मालिक A है. Now, this is a street which goes straight to the house of A. A के घर पे जाती है. Now B keeps buffaloes. B भैंस रखता है. And whatever the dung, the urine and or the other waste material, he scatters and smears before the main entrance of A. B keeps buffaloes. B भैंस रखता है और उनसे जो भी डंग या उसका जो भी यूरिन होता है, यूरिनल होता है, he scatters and smears before the main entrance of A. ये सारा का सारा कहां डाल देता है? A के घर के आगे, मेन एंट्रेंस के आगे. Now A has instituted a suit against B. A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है. तो कॉज ऑफ एक्शन A के पास क्या है? कॉज ऑफ एक्शन सिविल राइट एंड इट्स वायलेशन. ये होता है. A का सिविल राइट क्या है? A has a constitutional right to freely enjoy its property, Article 300 of the Constitution. A has a right to have a free passage to her house, to his house. A के पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय कर सकता है. उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ए के पास राइट है कि वो इस ये जो पैसेज है, पब्लिक स्ट्रीट है, इस पे फ्रीली एक्सेस कर सकता है. ए हैज अ राइट टू फ्रीली एक्सेस द पब्लिक स्ट्रीट विच गोज स्ट्रेट टू हिज हाउस. Both these rights have been given by the law. These have been conferred by the Constitution of India. So these are the legal rights of A. These are the civil rights of A. तो ये civil rights हैं A के. अब क्योंकि B यहां पे कूड़ा कचरा डाल रहा है, गोबर या जो भी चीज है उसको डाल रहा है, तो B has certainly violated the very civil right of A. And if the civil right, if A proves before the honorable court that he has a right, he has a civil right, he has a legal right to enjoy his property, and this is the property, and he has a right to have a free passage on the public street or to the public street, and it has been violated by B by scattering and smearing the dung, the urinal and the other waste material produced by his buffaloes, so he will be able to prove that he has a cause of action to institute a suit against B. तो वो प्रूव कर पाएगा, because the burden of proof lies on him. जो सूट फाइल करता है, जो चाहता है कि उसके फेवर में जजमेंट पास करे कोर्ट, उसको ही प्रूव करना पड़ेगा. And the one who files a suit is called as plaintiff. जो सूट फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? He is called as plaintiff. And against whom the suit is filed, who defends the suit, is called as defendant. जो सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, बिकॉज द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट. क्योंकि सूट को
इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन, सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी, रीड विद ऑर्डर 4, ये हम पढ़ेंगे सारी चीजें. सो द वन हु फाइल्स अ सूट और हु ब्रिंग्स द सूट इज कॉल्ड एज प्लेंटिफ, एंड अगेंस्ट whom द सूट इज फाइल्ड, हु डिफेंड्स द सूट, जो डिफेंड करता है, इज कॉल्ड एज डिफेंडेंट, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं. सो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है. टू प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है, बिकॉज ही इज द पर्सन हु हैज इंस्टीट्यूटेड द सूट, ही इज द पर्सन हु हैज ब्रॉट द सिविल सूट. ठीक है. नाउ मैं बोल रहा हूं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. He has a burden of proof. He needs to prove before the honorable court that his civil right has been violated by the defendant, and he has the cause of action. So cause of action को prove करने का burden of proof किसके ऊपर है? Plaintiff के ऊपर. But in cases of set off and counter claim, in cases of set off and counter claim, the burden of proof is on the defendant. Defendant को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. मैं बोल रहा हूं that a person who files a suit, the person who brings the civil suit, the burden of proof lies on him according to section 101 of Indian Evidence Act 1882. प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, लेकिन सेट ऑफ के केस में और काउंटर क्लेम के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है. ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होते हैं, ये हम करेंगे जब हम इन टॉपिक्स को करेंगे. देन वील अंडरस्टैंड ऑल दीज बोथ दीज टॉपिक्स. सेट ऑफ इज गिवन अंडर ऑर्डर 8 Rule 6, and counter claim is given under Order 8, Rule 6A to Rule 6G. Order 8 Rule 6 में set off दिया हुआ है, and Order 8 Rule 6A to 6G counter claim दिया हुआ है. Set off और counter claim के cases में, now this is a suit. A has instituted a suit against B. So A is a plaintiff and B is a defendant. This is a suit. Now, in cases of set off and counter claim, the defendant becomes the plaintiff. Defendant plaintiff बन जाता है. ये सारी चीजें हम समझेंगे. Right now I will not make it complicated. So that is why I'm not, going deep into this. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. You just need to remember here that the burden of proof lies on the plaintiff to prove the cause of action. Burden of proof plaintiff के ऊपर होता है कि उसको प्रूव करना है cause of action, कि cause of action है, उसका सिविल राइट वायलेट हुआ है, उसके पास सिविल राइट था. Second चीज you need to remember is this, in that in cases of set off and counter claim, the burden of proof lies on the defendant. Set off और counter claim के केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है. ये सारे क्वेश्चंस पीटी के हैं, प्रीलिम्स के हैं. नाउ हियर वन मोर थिंग व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वुड अमाउंट टू द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, whereas non proving of cause of action would amount to the dismissal of suit. अगर आप कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ही नहीं कर पाए अपने प्लेंट के अंदर. प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच यू हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट. प्लेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आपने सूट को इंस्टीट्यूट करा है. आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या कौन कौन सी चीजें जो प्लेंट में ऐड करनी होती हैं. लेटर ऑन मे बी इन द अपकमिंग क्लासेस आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. अभी नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. बट एज ऑफ नाउ
you need to know that plaint is a document by which you institute the suit, by which you initiate the civil suit. Civil suit आप plaint institute करके plaint file करके institute करते हो. So the burden of proof lies on the plaintiff. और उस प्लेंट के अंदर आपको कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करना होता है कि ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है. इफ यू कुड नॉट disclose the cause of action in the plaint, so the non-disclosure of cause of action would amount to the rejection of plaint. Order 7 Rule 11, आपका plaint reject हो जाएगा. Non-disclosure of cause of action would amount to the rejection of plaint. Order 7 Rule 11, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. अगर आप कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ही नहीं कर पाए, नॉन डिस्क्लोजर, देन अंडर ऑर्डर 7 Rule 11 क्लोज ए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा. बट इफ यू कुड नॉट प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन, यू हैव सक्सेसफुली डिस्क्लोज्ड द कॉज ऑफ एक्शन, बट यू कुड नॉट प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन, so in that case it would amount the dismissal of suit. Non proving of cause of action would amount to the dismissal of suit. Non proving, आपने डिस्क्लोज तो कर दिया है प्लेंट के अंदर, बट आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए, बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू, प्लेंटिफ के ऊपर, एंड यू कुड नॉट प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन. सो इन दैट केस डिसमिसल ऑफ सूट, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स के, दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वुड अमाउंट द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए कॉज ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब है कि आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा. और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, आपने डिस्क्लोज तो कर दिया है लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पाए, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ वॉज ऑन यू एंड यू कुड नॉट रिलीज दैट बर्डन ऑफ प्रूफ, यू कुड नॉट प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन, द कॉन्सिक्वेंस वुड बी द डिसमिसल ऑफ द सूट. सूट का डिसमिसल हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा. नाउ प्लीज रिमेंबर कि प्लेंट का रिजेक्शन होता है, इट्स ऑलवेज द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट. रिजेक्शन ऑफ सूट नहीं होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है, एंड डिसमिसल सूट का होता है. डिसमिसल ऑफ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पार्टीज. Parties. In parties, we'll understand who is plaintiff and who is defendant, joinder of parties, mis-joinder of parties, non-joinder of parties, proper party, necessary party, and proforma defendant. Who is plaintiff and who is defendant? Who is the proper party and necessary party? Who is called as a proforma defendant? What is the situation in which we say that it is a non-joinder of parties, when it is a mis-joinder of parties, when it is a case of joinder of parties? ये सारी चीजें अब हम इन द टाइटल ऑफ पार्टीज में समझेंगे कि पार्टीज में ये सारी चीजें आती हैं, राइट? नाउ एवरीबडी नोज दैट हु इज अ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स द सूट, हु फाइल्स द सूट. जो सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, बिकॉज ही फाइल्स द प्लेंट. A suit is filed by presenting a plaint
By presentation of a plaint, a suit is filed. Section 26 read with order 4. Section 26 को अगर आप order 4 के साथ पढ़ेंगे तो the institution of suit is given there. It is written that a suit is filed or the suit is instituted by presenting a plaint. एक plaint को institute करके, एक plaint को file करके आप एक suit को institute कर सकते हो. Because a plaint is filed, that is why this party, this person is called as a plaintiff. क्योंकि वो plaint file करता है. And the one against whom this suit has been filed, this plaint has been filed, who is going to defend this suit, who is going to deny and oppose this allegations that you have raised in your plaint, is called as a defendant. जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया है, जिसको डिफेंड करना है, जो अपोज करेगा, जो डिस्प्यूट को डिनाई करेगा, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ डिफेंडेंट. उसको क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट. राइट. सो बिकॉज a suit is filed by instituting a plaint, that is why the person who files the suit is called as plaintiff. क्योंकि ये plaint फाइल करके सूट होता है इंस्टीट्यूट, इसलिए उसको plaintiff बोलते हैं. There are certain cases in which a petition is filed. Now plaint में होता क्या है? A plaint, order 1, order 2, order 6, order 7 and many other, but these are basics. A plaint is a document in which the parties have been added, in which the parties have been joined according to order 1 of the CPC. The suit has been drafted as per the rules given in order 2, the frame of suit. Order 6, which contains the principles of general pleadings, the rules of general pleadings. So it has been complied with, and order 7 has also been complied with. So a document which has been prepared by complying all the rules, all these rules which are given in these 4 orders, these are basic orders, that document is called as a plaint. इसलिए उसको plaint बोला जाता है. And there are certain cases in which a petition is required to be filed. कुछ केसेस में पिटीशन फाइल करी जाती है. The person who files the petition is called as a petitioner. Now, because a plaint is filed, that is why we are calling that person a plaintiff. क्योंकि plaint फाइल किया है तो plaintiff होगा, और petition फाइल करेंगे तो क्या? Petitioner. The one who files the petition. Writ petition, you've moved to the Honorable Supreme Court or to the Honorable High Court of the respective state. So you need to file a petition, right? A writ petition. So the person who files the petition is known as petitioner. उसको क्या बोलते हैं? Petitioner बोलते हैं. The one who moves the application to the before the honorable court is called as applicant. जिसने application move करी है, उसको क्या बोलेंगे? Applicant. And the one who is going to respond to this application, who is going to reply to this application, is called as a respondent. जो इस एप्लीकेशन को रिप्लाई करेगा, जिसके अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन मूव करी है, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ रिस्पोंडेंट. यू मूव टू द एपलेट कोर्ट एंड यू फाइल्ड एन अपील बिफोर द एपलेट कोर्ट. आप एपलेट कोर्ट में चले गए और आपने अपील फाइल कर दी है. सो द वन who has filed an appeal is called as appellant. उसको क्या बोलेंगे? उसको appellant बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे? He will be called as appellant. So all these terms are very basic. Plaintiff, defendant, petition, petitioner, respondent, applicant. These are very basic terms which are used in the civil procedure. What is the situation of joinder of parties? Joinder of parties. Joinder of parties क्या होता है? If you will see order 1, rule 1, it says who may be joined as plaintiff? Who may be joined as plaintiff?
किसको एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कराया जा सकता है इन अ सूट? एंड इफ यू विल सी order 1 rule 3, it says who may be joined as defendant. Who may be joined as defendant. Who may be joined as plaintiff, that is given under order 1 rule 1. किसको आप एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन करा सकते हैं एक सूट में, और किन लोगों को आप एज डिफेंडेंट्स ज्वाइन करा सकते हो किसी एक सूट में. These are given under order 1 rule 1 and order 1 rule 3. A and B, they have got a cause of action against C. A और B के पास cause of action है to institute a civil suit, to institute a suit against C. Now, A and B, ये दो लोग हैं. Then it is a case of joinder of parties. ये दोनों सी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हैं. देन अंडर ऑर्डर 1 रूल 1 देयर आर सर्टेन कंडीशंस गिवन दैट हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ. प्लेंटिफ की तरह आप किसको ज्वाइन करा सकते हो? नाउ यू नीड टू कंप्लाई ऑर्डर 1 रूल 1 फॉर द जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स. आपको ऑर्डर 1 रूल 1 की जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा. अगर वो सारी कंडीशंस दो कंडीशंस है वहां पे, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स करा सकते हो. आप दोनों ए और बी को ज्वाइन करा के एक ही सूट में दोनों सूट एक ही सूट के अंदर दोनों की दोनों पार्टीज आ जाएंगी, ए और बी. नाउ द व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द जॉइंडर ऑफ पार्टीज? The very object behind the joinder of parties is to prevent the multiplicity of the proceedings. Multiplicity of proceedings को रोकने का जो मेन पर्पस है वो है, अगर इनको ज्वाइन नहीं कराया गया, then what will happen? A will file suit against C and B will file another suit against C. So there will be two suits against C. So to prevent the multiplicity of proceedings, के दो सूट्स नहीं फाइल कर ना फाइल करे जाएं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन है दोनों के पास. So instead of filing two suits, these two parties can be joined in one suit. एक ही सूट उसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है. So the joinder of plaintiffs, the conditions are given under order 1 rule 1. And if the parties are joined without complying the conditions of order 1 rule 1 as plaintiff, it will be a case of mis-joinder of plaintiffs. अगर आपने पार्टीज को ज्वाइन करा दिया ऑर्डर 1 रूल 1 की कंडीशंस को बिना कंप्लाई करे हुए, तो वो केस हो जाएगा मिस-जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ का. राइट? यू हैव ज्वाइंड द पार्टीज विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशंस गिवन अंडर ऑर्डर 1 रूल 1. दैट वुड बी अ केस ऑफ मिस-जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ. मिस-जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स. Order 1 Rule 1 was not complied with and the parties have been joined. Similarly, let's suppose A has got a cause of action to file a suit against B and C. B और C के अगेंस्ट cause of action है A के पास, plaintiff and defendants. Now, order 1 rule 3 says who may be joined as defendants. किसको आप as a defendant join करा सकते हो? So, you need to comply order 1 rule 3, the conditions given under order 1 rule 3, and then you can join both these defendants in a same suit, in a single suit. अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया तो क्या होगा? A will file a suit against B and another suit against C. दो सूट हो जाएंगे. So to prevent the multiplicity of proceedings, joinder of parties is must. And this is the main reason, and this is the main object behind the joinder of parties. अगर आपने ज्वाइन करा दिया डिफेंडेंट्स को without complying the conditions given under order 1 rule 3, so that would be a case of mis-joinder of defendants. Mis-joinder of
defendants. If order 1 rule 3 was not complied with, the conditions given under order 1 rule 3, if these conditions were not complied with and you have joined the defendants, that would be a case of mis-joinder of defendants. तो mis-joinder of parties क्या हो गया? Mis-joinder of parties हो गया है that you did not comply the conditions given under order 1 rule 1 and order 1 rule 3 respectively, if it is a case of the joinder of plaintiffs or if it is a case of joinder of defendants, as the case may be, and you have joined the parties in a suit. So that would be a case of mis-joinder of parties. Order 1 rule 1 की conditions को आपने नहीं comply किया अगर plaintiffs को join कराना है, या फिर ऑर्डर 1 रूल 3 की कंडीशंस को आपने नहीं कंप्लाई किया अगर डिफेंडेंट्स का केस है, मल्टीपल डिफेंडेंट्स का केस है, लेकिन आपने ज्वाइन करा दिया. सो दैट वुड बी ए केस ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज. मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज. ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 were not complied with the conditions given under order 1 rule 1 if it is a case of plaintiffs, multiple plaintiffs, and order 1 rule 3 if it is a case of multiple defendants. You've joined the parties without complying the conditions of order 1 rule 1 or order 1 rule 3 as the case may be, and you've joined the parties. So that would be a case of misjoinder of parties. उसको क्या बोलेंगे? Misjoinder of parties. Now let's move to the next term, नेसेसरी पार्टी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. हु इज ए नेसेसरी पार्टी? एंड द ज्वाइनिंग ऑफ द नेसेसरी पार्टी, टू ज्वाइन ए नेसेसरी पार्टी इन अ सूट is a must. If there is a necessary party and you have not joined that necessary party in your suit may be dismissed. आपका सूट इस बेस पे, इस ग्राउंड पे डिसमिस हो सकता है because you did not join the necessary party. There was a necessary party. Now the question is that who is a necessary party? Necessary party कौन होता है या कौन होती है? A party without whom a suit cannot be effectively decided, whose presence is essential for the effective decision of a suit. एक नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना आप सूट को इफेक्टिवली नहीं डिसाइड कर सकते हो, जिसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द इफेक्टिव डिसीजन ऑफ द सूट. इन द एब्सेंस ऑफ द नेसेसरी पार्टी, अ सूट कैन नॉट बी इफेक्टिवली डिसाइडेड. एन इफेक्टिव डिसीजन ऑफ अ सूट कैन नॉट बी रीच्ड without joining a necessary party into that suit. And more importantly, बहुत सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है नेसेसरी पार्टी में जो आपको समझनी है वो ये that a necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. नेसेसरी पार्टी के पास लीगल कैपेसिटी होती है आपकी डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोकने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की. A necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. So necessary party is a party without whom the effective decision or the case cannot be effectively decided. Necessary party is a party without whom an effective decision of the suit, an effective decision of the case cannot be achieved or cannot be reached at. In the absence of a party, the effective decision of the suit, the effective decision of the case is not possible. So, the presence of a necessary party is must in a suit. बहुत जरूरी है necessary party का join कराना एक suit के अंदर. A necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree.
a necessary party has the legal capacity to obstruct the execution of the decree. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को भी रोक सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, उसमें अड़ंगा लगा सकती है नेसेसरी पार्टी. A decree has been pronounced by the honorable court in your favor. You have won the suit and the decree has come out in your favor. आप सूट जीत गए हो, आपके फेवर में डिक्री आ गई है. Now what is the next step? You will go for the execution of that decree under order 21 of the CPC. आप एग्जीक्यूशन में जाओगे उसकी. बट क्योंकि नेसेसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करी थी आपने, देयर वाज अ नेसेसरी पार्टी whom you did not join in your suit. So this necessary party can obstruct the execution of the decree. वो आपकी डिक्री की एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है. And as I said that in the absence of the necessary party, an effective decision of the suit cannot be reached at or cannot be obtained. Necessary party की absence में आप एक effective decision नहीं obtain कर सकते हो. Whereas a proper party and as I said that the joining of a necessary party in a suit is must, that is mandatory. Otherwise, that may result in the dismissal of your suit. If you did not join a necessary party, there was a necessary party, you did not join that party in your suit, solely on the ground of the non-joining of the necessary party, your suit may be dismissed. सिर्फ इस ground पे आपका suit dismiss हो सकता है. A proper party is a party without whom an effective decision of a suit can be reached at or can be obtained. Effective decision आपके सूट का हो सकता है, आपके केस का हो सकता है. But the joining of a proper party is required for the complete and the final decision of the suit. अगर complete और final decision चाहिए आपको सूट के अंदर, तो proper party का होना भी जरूरी है सूट के अंदर. लेकिन an effective decision of the suit can be obtained in the absence of the proper party. Proper party की absence में proper party को बिना join कराए एक effective decision suit का आ सकता है, obtain किया जा सकता है. And very importantly, a proper party does not have a legal capacity like a necessary party to obstruct the execution of the decree. प्रॉपर पार्टी के पास वो लीगल कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके. ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ प्रॉपर पार्टी एंड द नेसेसरी पार्टी, दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समबडी आस्क्स यू, if in an interview the jury asks you, the honorable judges, these are the जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जनरली वो हाई कोर्ट जजेस होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस होते हैं. एंड यू आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ नेसेसरी पार्टी एंड अ प्रॉपर पार्टी. सो यू विल टेल देम दीज टू डिफरेंसेस, दैट एन इफेक्टिव डिसीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर पार्टी, whereas an effective decision cannot be obtained in the absence of a proper party. So the joining of the necessary party is must in a suit. And more importantly, a necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree, whereas a proper party does not have such capacity, such legal capacity to obstruct the execution of the decree. Proper party without whom an effective decision of the case
can be obtained, but the complete and final for the complete and final decision of the suit or the case, the joining of proper party is essential. अगर आप एक कंप्लीट और एक फाइनल डिसीजन चाहते हो आपके सूट का, आपके केस का, तो उसमें प्रॉपर पार्टी का होना जरूरी है. इवन दो द ज्वाइनिंग ऑफ अ प्रॉपर पार्टी इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट as important as the joining of the necessary party, because if in case the proper party has not been joined, that would not result as a dismissal of suit. उसकी वजह से आपका सूट का डिसमिसल नहीं होगा. लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कराई, so that would result or that may result in the dismissal of your suit. Right? Now, this was a distinction between a necessary party and a proper party, and a proper party does not have any legal capacity to obstruct the execution of the decree. उसके पास कोई ऐसी लीगल कैपेसिटी नहीं होती है जिससे कि वो आपके डिक्री के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है. राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी विद एन एग्जांपल. A and B are the joint owners. A and B are joint owners of this house. इस घर के joint owners हैं A और B. Some C has dispossessed them. किसी C ने इन दोनों को dispossess कर दिया, इस घर से निकाल दिया है. Now, A alone has filed a suit against C. A ने अकेले ने C के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है, because B is not willing to be a plaintiff in the suit. B is not willing to be a plaintiff. B does not want to file a suit against C. B नहीं चाहता है कि वो C के अगेंस्ट सूट फाइल करे, और A ने अकेले नहीं C के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया. A और B दोनों के दोनों, the A and B, they both are the joint owners of this house, and some C has dispossessed them. और किसी C ने इनको घर से बाहर निकाल दिया. A alone has filed a suit against C for this dispossession, for the recovery of possession of this house. Now B does not want to be a party. B does not want to file a suit against C. He is not willing to be a party. He is not willing to be a plaintiff in the suit. वो नहीं चाहता है कि वो plaintiff बने. Now the decree comes out in favor of A. Decree आ जाती है A के फेवर में. Now because B was a joint owner, B is a necessary party. Because B and A, they have the jointness of interest. उन दोनों का interest same है. And this decree which has come out in favor of A will certainly affect the interest of B. ये B के interest को affect करेगी. Because A and B, they have the jointness of interest. इन दोनों का इंटरेस्ट सेम है. बट बिकॉज B is not willing to be a party, B is not willing to be a plaintiff, he does not want to file a suit against C, तो उसको प्लेंटिफ नहीं बनाया B ने, A ने प्लेंटिफ नहीं बनाया, जॉइंडर ऑफ पार्टीज नहीं किया, ऑर्डर 1 रूल 1 के अकॉर्डिंग उसको एज ए प्लेंटिफ नहीं ज्वाइन कराया, बिकॉज वो चाहता ही नहीं है. Now because A is now here, B जो है, he is a necessary party, and being a necessary party, he has a legal capacity to obstruct the execution of this decree. वो इस decree के execution को obstruct कर सकता है. To avoid this situation, इस situation को avoid करने के लिए,
there is a concept called Proforma Defendant. Proforma Defendant, यहां पे हम दोनों चीजों को समझ लेते हैं, Proforma Defendant एंड नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी को भी. नाउ बिकॉज B is not willing to be a plaintiff in this suit and he has a jointness of interest. Jointness of interest with A. B का और A का जो इंटरेस्ट है, जो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, जॉइंटनेस है इन दोनों के इंटरेस्ट में. Then here comes the concept of proforma defendant. Proforma means only for the sake of name. Name sake, सिर्फ नाम के लिए डिफेंडेंट, only for the name sake. Now B can be made as a defendant. Now he will be a proforma defendant. Now B and C, they have conflict of interest. Conflict of interest. इन दोनों के बीच में तो conflict of interest है, dispute है ना. C has dispossessed A and B, तो A का इंटरेस्ट और B का इंटरेस्ट सेम है. कायदे से तो B को प्लेंटिफ होना चाहिए था, लेकिन B नहीं चाहता है, B नहीं चाहता था सूट फाइल करना, B नहीं चाहता था प्लेंटिफ बनना. तो क्योंकि B नेसेसरी पार्टी है, नाउ ही इज अ नेसेसरी पार्टी, B इज अ नेसेसरी पार्टी इन दिस सूट. Being a necessary party, he has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. Necessary party होने के कारण उसके पास लीगल कैपेसिटी है कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, ए मेड बी एज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. ए ने बी को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना दिया. प्रोफॉर्मा मीन्स ओनली फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम के लिए डिपेंडेंट है. बिकॉज बी एंड सी दे हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. ए और बी के इंटरेस्ट सेम है. सो नाउ जब इसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना देंगे, सो द सिचुएशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री कैन बी अवॉइडेड, राइट. So this was a concept of necessary party, proper party and proforma defendant. Proforma defendant means only for the name sake. Proforma बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Proforma defendant. Proforma defendant means when there is a jointness of interest. In this example, जो मैंने example बताया आपको, A and B were the joint owners and only A filed a suit against C and B did not file the suit against C. So B is a necessary party and he has a jointness of interest. इन दोनों का इंटरेस्ट सेम है, jointness of interest. Now they both have a conflict of interest with C. कायदे से B को प्लेंटिफ होना चाहिए था, बट B डिड नॉट वांट टू बी अ प्लेंटिफ. वो नहीं उसने नहीं चाहा कि वो प्लेंटिफ, उसको प्लेंटिफ बना जाए. एंड ही डज नॉट वांट टू फाइल अ सूट. वो नहीं चाहता है कि C के अगेंस्ट सूट फाइल करे. एंड ही इज नॉट विलिंग टू बी अ प्लेंटिफ. वो प्लेंटिफ भी बनना नहीं चाहता है. A alone has filed a suit against C, and just to avoid the situation, because B being the necessary party, he has the legal capacity to obstruct the execution of the decree. उसने B को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना दिया ताकि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सके, राइट. सो this was the situation of proforma defendant, necessary party and proper party. There is one more term, that is non-joinder of parties. Non-joinder of parties.
Non-joinder of parties क्या होता है? When there is a necessary party or the proper party in a suit and you did not join that party. Necessary party or proper party. And you did not join. नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है और आपने उसको नहीं ज्वाइन कराया एज अ पार्टी टू द सूट, उसको पार्टी नहीं बनाया आपने सूट में, सो दैट वुड बी अ केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज. A necessary party is there or a proper party is there, but you did not make that necessary party or a proper party as a party to your suit and you instituted the suit. A has filed a suit against B and C was a necessary party. C necessary party थी, but A did not make C a party. A ने C को पार्टी नहीं बनाया, या फिर C मान लेते हैं प्रॉपर पार्टी थी, but A himself alone he has filed a suit against B and he did not make C a party in this suit, और उसने C को पार्टी नहीं बनाया. तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? दिस इज द केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज का केस है ये. मिस जॉइंडर होता है जब आपने ऑर्डर 1 रूल 1 को या फिर ऑर्डर 1 रूल 3 को नहीं कंप्लाई किया और आपने पार्टीज को ज्वाइन करा दिया. दैट इज द केस ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज. नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी होता है कि प्रॉपर पार्टी थी या फिर नेसेसरी पार्टी थी और आपने उसको पार्टी नहीं बनाया, उसको ज्वाइन नहीं कराया सूट में और आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया. सो दैट इज द केस ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. राइट, आई बिलीव आपको समझ आ रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर. Subject matter is of 3 types: personal, proprietary, and pecuniary. Personal subject matter, proprietary subject matter, and pecuniary subject matter. Proprietary means which is related to the property. Which is related to property. It can be an immovable property or movable property or a right related to the property. Right related to the property. You have filed a suit for the declaration of a title. Somebody has trespassed into your immovable property, and the suits like that. Pecuniary subject matter, which is related to the money claim. Personal subject matter is a subject matter which is neither related to property nor related to the money. Neither related to property nor related to money. जिसका संबंध ना तो मनी से है, पैसों से है, ना ही प्रॉपर्टी से है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू स्पीच. somebody has violated your right to speech and expression. Somebody has infringed your right to privacy. So these are personal subject matters. Proprietary, in which the property is involved, whether immovable property or movable property. Pecuniary, in which the money claims are asked from the honorable court. You must have heard an idiom that says an apple of discord. एक इंग्लिश का मुहावरा है, आपने जरूर सुना होगा, an apple of discord, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़. You can correlate this subject matter with this idiom, an apple of discord. What is the subject matter of your suit is
whether it is a right or a property for which you are fighting for. आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, you have filed a suit against B for the declaration of title. Declaration of title. This is the house which you claim, A claims that this is my house. A कहता है ये मेरा घर है, B कहता है ये मेरा घर है. A says, let's take a hypothetical situation. A says that he received this house in succession from his father. Succession from his father. A बोलता है कि मुझे ये घर succession में मिला है अपने पापा से. Succession is a concept in which the owner of the property dies and it goes to the legal heirs of that property. उसके जो legal heirs होते हैं, सारे ये जितनी भी चीजें हैं, succession, legal heirs, ये family जब हम when we'll succession जब हम पढ़ेंगे तो उसमें I'll explain each and everything. But अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए subject matter क्या होता है, I took this example. A बोलता है ये मेरा घर है और B कहता है ये मेरा घर है. Let's suppose A कहता है that I received this house, I obtained this house through succession from my father. कि after the death of my father, I received this house in succession. मेरे पापा की डेथ के बाद ये घर मुझे मिला है. B कहता है I had purchased this house. Purchased this house. मान लेते हैं इनके जो फादर थे, A के फादर थे, उनका नाम श्री राम था. So B says that I had purchased this house from श्री राम. मैंने श्री राम से ये घर खरीदा था, तो मैं इस घर का ओनर हूं. I am the owner of this house. A has filed a suit for the declaration of title कि आप टाइटल डिसाइड करें कि ये घर किसका है. So the subject matter of this suit is this house. सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है हाउस. सब्जेक्ट मैटर इस सूट में क्या है? हाउस. ये घर सब्जेक्ट मैटर है. सो दिस इज अ प्रोप्राइटरी सब्जेक्ट मैटर, राइट? सो द नेक्स्ट टर्म सब्जेक्ट मैटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़. जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो, क्वारल कर रहे हो, जिस चीज के लिए आपने सूट फाइल किया है, it can be a right, it can be a money claim, it can be a property or a right related to the property. So that is the subject matter. इसी से related है हमारी next term, that is title. Title is the legal capacity with respect to the subject matter. Title वो legal capacity है which is related to the subject matter. Title is the legal capacity with respect to the subject matter. With respect to the subject matter. Now here, अगर आप इसी एग्जाम्पल में समझेंगे that A has filed a suit against B for the declaration of title, कि आप डिसाइड करें कि टाइटल किसका, who is entitled to this house, who is the owner of this house. So house, this house is the subject matter, and title, that A is claiming the ownership of this house and B is also claiming the ownership of this house. So ownership is the legal capacity with respect to the subject matter. So title क्या हो गया? इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो ownership is the title that both these parties A and B are claiming. They are seeking this relief of title, the declaration of title from the Honorable Court. So title is the legal capacity with respect to the subject matter, and subject matter is house in this
सूट। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें नेक्स्ट टर्म को भी समझने में मदद मिल गई है कि टाइटल क्या होता है। टाइटल होता है लीगल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, और इसमें सब्जेक्ट मैटर हाउस है और टाइटल जो होगा वो होगा ओनरशिप, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेमेडी, and there is one more term which is used very frequently, that is called relief. Remedy is a term which is used in substantive law, and relief is used in procedural law, you can say, generally. Remedy आप substantive law में use करते हो. For example, Indian Penal Code, Specific Relief Act, Indian Contract Act, all these are substantive laws. Relief is a term which is used, दोनों का मतलब almost same ही होता है. Remedy और relief दोनों एक ही चीज होती है एक तरीके से. When you seek this remedy from the honorable court, from the honorable civil court in a civil proceeding, so that becomes a relief. You have filed a suit, and in the prayer clause, you are seeking the relief from the honorable court. You are not seeking the remedy. Remedy is given in the substantive law. Substantive law determines the rights and the liabilities of the parties. वो rights और liabilities को determine करते हैं. And the remedy is a term which is used in the substantive law. Substantive law में remedy use करी जाती है. The moment you have sought this remedy in a civil proceeding from the honorable civil court, this remedy becomes a relief. जैसे ही आप honorable court से remedy मांगते हो, you have a remedy and you're seeking this remedy from the honorable court, then this remedy becomes relief. It means you are seeking the relief from the honorable civil court. In the prayer clause, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. Remedy is used in a substantive law, and the moment you seek this remedy from the honorable civil court in a civil proceeding, for example in a suit, it becomes a relief. Remedy is a term used in the substantive law. And the moment you seek this remedy in a civil proceeding, for example, in a suit, from the honorable civil court, it becomes relief. तो उसको रिलीफ बोलते हैं. ठीक है. जैसे ही आपने सिविल कोर्ट में इन अ सिविल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल इन अ सूट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. सूट के अंदर जो लास्ट जो चीज होती है, द लास्ट स्टेटमेंट इन अ सिविल सूट इज द प्रेयर क्लोज. इन अ प्रेयर क्लोज यू सीक द रिलीफ फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट. जिस चीज के लिए आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, जो रिलीफ आप चाहते हो, that relief is mentioned in the prayer clause in a suit. So that this remedy is given in this term remedy is used in a substantive law, and the moment you seek this remedy in a civil proceeding from the honorable civil court, it becomes a relief. उसको relief बोला जाता है. The last term is matter in issue. Matter in issue.
matter in issue. Matter in issue is the process or effect by which you obtain the title. You obtain the legal capacity with respect to the subject matter. The fact or the process by which you received or you obtained the legal capacity with respect to the subject matter means by which you obtained the title is the matter in issue. The process or the fact by which you obtain or receive the title, that means that is the legal capacity with respect to the subject matter is called as matter in issue. उसको matter in issue बोलते हैं. The process or the fact by which you obtain, the process or the fact by which you obtain or receive the title, जो प्रोसेस या फैक्ट जिसकी वजह से आपको टाइटल मिलता है. टाइटल मीन्स द लीगल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर. उस प्रोसेस या उस फैक्ट को क्या बोलते हैं? मैटर इन इशू. दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर इन इशू. दिस एग्जाम्पल विच आई जस्ट गिव यू, ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, इन विच ए एंड बी दे बोथ वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ दिस हाउस. ए और बी दोनों के दोनों इस घर की ओनरशिप को क्लेम कर रहे थे. दे वर सीकिंग द ओनरशिप ऑफ दिस हाउस. A was claiming that he has obtained the ownership of this house because he succeeded this house from his father. He has got this house in the succession from his father. And B was claiming that he is the owner of this house because he had purchased this house from the father of A. A बोल रहा था कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं. I am entitled to this house because I have succeeded this house from my father. मुझे ये घर succession में मिला है after the death of my father. So in this sense, I am the owner of this house. B was claiming that I am the owner of this house because I had purchased this house from A's father. मैं इस घर का मालिक हूं क्योंकि मैंने A के फादर से इस घर को खरीदा था. Now, ए बोल रहा है सक्सेशन में मिला है और बी बोल रहा है उसने परचेज किया है. एंड दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. टाइटल इज द ओनरशिप. टाइटल इज द ओनरशिप, द लीगल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर. ओनरशिप टाइटल है. नाउ मैं क्या बता रहा हूं आपको, that the process or the fact by which you obtain or receive the title, जिस प्रोसेस से या जिस फैक्ट की वजह से आपको वो टाइटल मिला है या मिलता है, राइट, इसको मैं इस तरीके से भी कहता हूं obtained. You have obtained or you have received. The fact or the process by which you have obtained or you have received the title is called as a matter in issue. उसको matter in issue बोलते हैं. Title is the legal capacity with respect to the subject matter. जिस प्रोसेस से या जिस फैक्ट की वजह से आपको वो टाइटल मिला है उसको मैटर इन इश्यू बोलते हैं. और इसमें ए बोल रहा है कि सक्सेशन से मिला है और बी बोल रहा है कि मैंने उसको परचेज किया है. सो मैटर इन इश्यू क्या हो गया? मैटर इन इश्यू इज सक्सेशन, एंड इन दिस केस, इन केस ऑफ ए द मैटर इन इश्यू इज सक्सेशन, एंड इन केस ऑफ बी द मैटर इन इश्यू इज परचेज. So this is matter in issue. A के केस में succession matter in issue है because he is claiming, he is alleging that he is the owner of this house because he succeeded. He has received this house, he has obtained this house in succession after the death of his father. So वो A कह रहा है
कि सक्सेशन में उसको ये घर मिला है, एंड दैट इज हाउ ही इज क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ दिस हाउस। और वो सक्सेशन को बोल रहा है कि थ्रू सक्सेशन आई हैव बिकम द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो इसका टाइटल मेरे को इसलिए मिलना चाहिए, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं, क्योंकि सक्सेशन में मुझे ये मिला है। सो द टाइटल इज द ओनरशिप। एंड हाउ डिड ही रिसीव, हाउ डिड ही गेट द ओनरशिप? इज द सक्सेशन दैट ही इज क्लेमिंग। उसको सक्सेशन के थ्रू मिला है। ओनरशिप टाइटल है, ए बोल रहा है, और ये ओनरशिप उसको कैसे मिली? थ्रू सक्सेशन। दैट इज व्हाट ए इज कंटेस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। B is saying that I am the owner of this house and I got the ownership of this house because I had purchased this house from the father of A. कि मैं इस घर का मालिक हूं क्योंकि मैंने इसको खरीदा था A के फादर से। So the title is again the ownership in case of B as well. And how did he get the ownership? Through the purchase of this house. So the purchase is the matter in issue in case of B, right? तो ये सारी टर्म्स थी जो कि बहुत बेसिक हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं सीपीसी में। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, एक बार उनकी विद द हेल्प ऑफ नोट्स आल्सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू ब्रश अप व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार इन टुडेज क्लास। एक बार ब्रश अप कर लेते हैं थोड़ा सा और उसको समझते हैं। ये बहुत बेसिक टर्म्स थी। सेक्शन 2 ऑफ CPC contains various definitions. सेक्शन 2 जो CPC का है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें से डेफिनेशन डिक्री की, ऑर्डर की और जजमेंट की। These definitions are very important. ये सारी भी हम करेंगे। आप ये नहीं समझे कि मैंने वो नहीं बताया, what is decree, what is order, and these are the definitions which are given under section 2 of CPC. वो हम बाद में करेंगे, बट ये बेसिक टर्म्स हैं बहुत जो फ्रिक्वेंटली यूज करी जाते हैं सिविल प्रोसीजर में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड these terms that we have just understood with the help of the notes as well. Okay, let's understand all these terms with the help of the notes. The first term that we understood is the cause of action. The cause of action means the right to file a suit or the right to bring about the civil proceedings. सूट, सिविल सूट फाइल करने का राइट या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का राइट और सिविल एक्शन is a cause of action. Its literal meaning is the existence of a legal right and the violation of the same. Cause of action is the pivot or the center of the suit. So the legal right means civil right. A civil right which has been conferred by the law is the legal right. So the existence of a civil right and the violation of the civil right by another person gives you a right to file a suit or to initiate a civil proceeding or to take a civil action against that person who has violated or who has infringed your civil right. This civil right must be a right which has been conferred by the law, which has been given by the law. ये civil right वो right होना चाहिए जो कि law ने आपको दिया है. That is why here I am saying it a legal right. It must be a legal right. ठीक है? The burden of proving the cause of action is on the plaintiff, and in cases of set-off and the counterclaim, the burden of proof is on the defendant. Burden of proof, section 101 of Indian Evidence Act 1882, मैंने बताया, lies on the person who desires from the court to give judgment. ठीक है? जो भी judgment चाहता है, जो भी बोल रहा है कि जो मैं facts कह रहा हूं, वो exist करते हैं, that person needs to, or that person has the burden of proof to prove that these facts exist. So burden of proof in cases of cause of action lies on the plaintiff. Plaintiff पे होता है burden of proof, and in cases of set off and counterclaim, set off order 8 rule 6 and counterclaim order 8 rule 6a to rule 6g. In cases of set off and counterclaim, the burden of proof is on the defendant. Now there is an important note. What if the plaintiff did not disclose the cause of action in his plaint? Now, I told you that the non-disclosure of the cause of action would amount to the rejection of plaint under Order 7 Rule 11 Clause A.
अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कॉज ऑफ एक्शन को प्रूफ कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज करने का, कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, मेरा सिविल राइट वायलेट किया है इसने। सो अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया प्लेंट के अंदर, सो दैट वुड अमाउंट फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट order 7 rule 11 clause A. And if you could not prove the cause of action, अगर आप प्रूव ही नहीं कर सके cause of action को, so that would result into the dismissal of the suit, तो उस केस में आपका सूट का डिसमिसल हो जाएगा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ cause of action amounts to the rejection of plaint order 7 rule 11 clause A. Whereas the non-proving of the cause of action, dismissal of suit हो जाएगा, right? Parties is the next term that we understood. In parties, plaintiff, defendant, joinder of parties, order 1, rule 1 in cases of joinder of plaintiffs, and order 1, rule 3 in cases of joinder of defendants. Non-joinder of parties, आपने order 1 rule 1 और order 1 rule 3 को, as the case may be, you did not comply the conditions given under order 1 rule 1 in cases of the joinder of plaintiffs, and you joined the party, you joined the plaintiff. That would be a case of non-joinder, mis-joinder. That would be a case of mis-joinder of plaintiffs. You did not comply the conditions of order 1 rule 3 and you joined the defendant. So that would be a case of mis-joinder of defendants. आपने ऑर्डर 1 रूल 1 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया, उनको नहीं माना और आपने प्लेंटिफ को ज्वाइन करा दिया, तो वो दैट वुड बी अ केस ऑफ मिस-जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। आपने ऑर्डर 1 रूल 3 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया और आपने डिफेंडेंट को ज्वाइन करा दिया इन अ सूट, दैट वुड बी अ केस ऑफ मिस-जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। non-joinder of parties is a situation wherein there is a proper party or a necessary party. Proper party and necessary party है, but you did not join that as a party in the suit. आपने उसको as a party नहीं join कराया, you did not make the proper party or the necessary party. A person who is a necessary party or a proper party, you did not make him a party in the suit and you instituted the suit. आपने उसको पार्टी नहीं बनाया और आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, that would be a case of non-joinder of parties. Proper party, necessary party, proforma defendant. Proper party is the party in the absence of whom the effective decision of the suit can be obtained. The effective decision of a suit can be passed. उसकी absence में, proper party की absence में effective decision suit का pass किया जा सकता है. But for a complete and a final decision of a suit, the presence of a proper party is essential. अगर आपने complete और final decision suit का करवाना है तो उसके लिए आपको proper party को भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा सूट के अंदर. Necessary party is a party in the absence of whom an effective decision of a suit cannot be obtained. एक effective decision आपके सूट का नहीं हो सकता है. An effective decision of a suit cannot be passed by the court in the absence of a necessary party. So it is indispensable that a necessary party must be there in the suit as a party. And most importantly, a necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. If you did not join a necessary party in the suit, so that necessary party, because it has the legal capacity to obstruct the execution of the suit, because it has the legal capacity to obstruct the execution of the decree, it may create problems when you will file an application for the execution of the decree. Proforma, this is proforma. Proforma defendant. Proforma defendant means only for the namesake. Only आप सिर्फ दिखाने के लिए उसको defendant बना रहे हो. He is actually a necessary party. A party who is a necessary party in a suit, but he is not willing to be a party in the suit. He does not want to be a plaintiff in the suit. वो नहीं चाहता है कि वो सूट में पार्टी बने, plaintiff बने या सूट फाइल करे. So because he is a necessary party and he has a legal capacity to obstruct the execution of the decree, to avoid this situation, because उसके पास legal capacity है, वो आपके decree के execution को obstruct कर सकता है, आप उसको proforma defendant बना लेते हो. proforma defendant का मतलब है that he has a jointness of interest with the plaintiff. उसका interest, jointness of interest है plaintiff के साथ, plaintiff का और उसका interest same है, and he has a conflict of interest with the co-defendant. जो co-defendant है जिसके साथ आपने defendant बना दिया है, but वो defendant नहीं, वो
कायदे से प्लेंटिफ है, तो उसके साथ डिफेंडेंट के साथ को डिफेंडेंट के साथ ही हैज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। प्लेंटिफ इज द वन हु फाइल्स और ब्रिंग्स द सूट, defendant is the one against whom the suit is filed, who defends the suit, right? Joinder and mis-joinder of parties. If two or more persons are joined as plaintiffs or defendants in a suit according to Rule 1 and Rule 3 of Order 1, then it would be a case of joinder of parties. But if they are joined in contravention of these rules of Order 1, it will be a case of mis-joinder of parties. Order 1 Rule 1 says who may be joined as a plaintiff. Order 1 Rule 3 says who may be joined as defendants. You have joined the parties by complying the conditions, the rules given in Order 1 Rule 1 and Order 1 Rule 3. So that would be a case of joinder of parties. लेकिन अगर आपने उनका कॉन्ट्रावेंशन करा है, अगर आपने उनको नहीं कंप्लाई किया है कंडीशंस गिवन अंडर Order 1 Rule 1 and Order 1 Rule 3 और आपने पार्टीज को ज्वाइन करा दिया एज अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट एज द केस मे बी, सो दैट वुड बी अ केस ऑफ that would be a case of mis-joinder of parties. That would be a case of mis-joinder of parties. कि आपने join करा दिया है लेकिन that is a mis-joinder because you did not comply the conditions given under Order 1 Rule 1 and Order 1 Rule 3. There are certain conditions given in Order 1 Rule 1. If these conditions are not complied with while joining the parties as plaintiffs to the suit, then it would be a case of non-joinder of, it would be a case of mis-joinder of plaintiffs. On the other hand, if Order 1 Rule 1 is followed, it would be a case of joinder of parties. Mis-joinder of parties है अगर आपने Order 1 Rule 1, mis-joinder of plaintiffs है अगर आपने Order 1 Rule 1 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया। तो अगर कंप्लाई किया है फिर आपने ज्वाइन कराया है प्लेंटिफ को, that would be a joinder of plaintiff. Similarly, if the conditions given under Order 1 Rule 3 are not complied with while joining the parties to the suit as defendants, then it would be a case of mis-joinder of, this is mis-joinder of defendants. And it would be a case of joinder of defendants if the conditions prescribed under Order 1 Rule 3 are followed. अगर आपने Order 1 Rule 3 की कंडीशंस को फॉलो किया है और फिर उसके बाद आपने डिफेंडेंट्स को ज्वाइन कराया है तो वो joinder of defendants होगा। लेकिन अगर आपने डिफेंडेंट को ज्वाइन करा दिया है लेकिन Order 1 Rule 3 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया, उनको नहीं माना, so that would be a case of mis-joinder of defendants. In simple words, whenever a party as plaintiff does not fulfill the conditions of Order 1 Rule 1 and still he is joined as plaintiff in the suit, it is a case of mis-joinder of plaintiffs. And if he does not fulfill the conditions of Order 1 Rule 3 and still he is joined as defendant to the suit, then it would be a case of mis-joinder of defendants. Right? बहुत सिंपल है, मैं समझा चुका हूं आपको। Necessary party. The presence of a necessary party is indispensable to the suit because a suit cannot be effectively decided in the absence of a necessary party. A suit cannot be effectively decided in the absence of a necessary party. So, the presence of a necessary party in a suit for the effective decision of a suit is indispensable. ये एक ऐसी चीज है जो कि indispensable है, which cannot be avoided. So, एक necessary party का होना, उसको join कराना सूट में बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं join कराया, that may be a ground for the dismissal of your suit. उसकी वजह से आपका सूट भी dismiss हो सकता है। And the another trait of a necessary party is this, that a necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. और अगर आपने नहीं join कराया तो वो आपके decree की execution को भी obstruct कर सकती है। Effective decision भी नहीं आएगा सूट का और उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी करा सकते हैं डिक्री को, डिक्री के एग्जीक्यूशन को, और योर सूट मे बी डिसमिस्ड, द सूट मे बी डिसमिस्ड इफ यू डिड नॉट ज्वाइन द नेसेसरी पार्टी इन अ सूट. सो द प्रेजेंस ऑफ अ नेसेसरी पार्टी इज इंडिस्पेंसिबल टू अ सूट because a suit cannot be effectively decided in the absence of a necessary party. A necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. The suit may be dismissed. The suit may be dismissed for the non-joinder of a necessary party. So the non-joinder of a necessary party may become a ground for the dismissal of your suit. ठीक है, उसकी वजह से आपका सूट डिसमिस हो सकता है. Proper party. A proper party is one in whose absence an effective decision can be passed, but whose presence
is essential for the complete and final decision of the suit. Effective decision can be obtained of a suit in the absence of a proper party, but for a complete and a final decision, एक complete, बिल्कुल complete एक final decision के लिए of a suit, the presence of a proper party is essential. अगर आप बिल्कुल complete और बिल्कुल final एक decision चाहते हो तो proper party का होना आपके suit में जरूरी है. But in the absence of a proper party, your suit may not be dismissed. Your suit, the dismissal of a suit cannot be done on a ground that the proper party was not joined in the suit. इसकी वजह से आपका suit dismiss नहीं हो सकता है. And second, a proper party, like a necessary party, does not have a legal capacity to obstruct the execution of a decree. Proper party के पास ऐसी कोई भी legal capacity नहीं होती है जिससे कि वो आपके डिक्री के execution को obstruct कर सकती है. Right? A proper party does not have any legal capacity to obstruct the execution of a decree. Right? So this is a major difference. It's quite a major difference between a proper party and a necessary party, that a necessary party has a legal capacity to obstruct the execution of a decree, whereas a proper party does not have such legal capacity. In the absence of the necessary party, an effective decision of a suit cannot be obtained, cannot be passed, whereas in the absence of a proper party, the effective decision of a suit can be obtained. Whereas for a complete and for a final decision, the presence of a proper party is also required. एक complete और final decision suit के अगर आप चाहते हो तो उसमें proper party का होना भी जरूरी है. Non-joinder of a party. Non-joinder of a party, it is a situation wherein a party is found to be a proper or a necessary party, but he has not been joined as a party in the suit. If such thing is found in a suit, then it would be a case of non-joinder of a party. एक proper party थी या फिर एक necessary party थी और आपने उसको party नहीं बनाया suit में, then this would be a situation which is called as non-joinder of a party. Proper party या necessary party को अगर आप party नहीं बनाओगे तो that would be a case of non-joinder of party. मिस-जॉइंडर होता है जब आपने ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया और फिर आपने प्लेंटिफ का डिफेंडेंट को ज्वाइन करा दिया, तो वो होता है मिस-जॉइंडर. नॉन-जॉइंडर होता है जब आपने प्रॉपर पार्टी या नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कराया, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ नॉन-जॉइंडर. प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. प्रोफॉर्मा हियर मींस ओनली फॉर द सेक ऑफ. सिर्फ नाम के लिए आप उसको डिफेंडेंट बना रहे हो, कायदे से वो प्लेंटिफ है. Right? This is not performa, this is proforma. Proforma here means only for the sake of. It means a necessary party who does not want to become a party in a suit, but if he is not made a party in the suit, then as he has a legal capacity to obstruct the execution of a decree, he may create problems. Therefore, to overcome such situation, such party is made as proforma. Proforma defendant in a suit, because he has a legal capacity, because he is a necessary party. So, and he is not willing to be a plaintiff, he is not willing to join the suit, he does not want to institute the suit, he does not want to be a part of the suit. वो नहीं चाहता है कि वो suit institute करे, necessary party है. I gave you an example of the joint owner of a house. A and B were the joint owners of the house, and some C has dispossessed them. That only A has instituted a suit against C, and B, because he was not willing to be a party, he was not willing to be a plaintiff, he does not want to file a suit against C, but because he was a necessary party, he has a legal capacity to obstruct the execution of the decree. He could have, in the execution of the decree, he could have obstructed the execution of a decree. So that is the reason A ने उसको पर प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बनाया, ताकि ये जो सिचुएशन होती है कि वो उसके पास वो ऑब्स्ट्रक्ट करा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री को, तो उसको अवॉइड किया जा सके. राइट. सो प्रोफॉर्मा हियर मींस ओनली फॉर द सेक ऑफ. इट मींस अ नेसेसरी पार्टी हु डज नॉट वांट टू बिकम अ पार्टी इन अ सूट, बट इफ ही इज नॉट मेड अ पार्टी इन द सूट, then as he has a legal capacity to obstruct the execution of the decree, he may create problems. Therefore, to overcome such situation, such party is made as a proforma defendant in a suit. Whenever in a suit a person has been made the defendant,
and he has a conflict of interest with the co-defendant and conflict of interest and the jointness of interest with the plaintiff. plaintiff के साथ उसका jointness of interest होता है because कायदे से वो plaintiff ही होता है, बट सिर्फ क्योंकि वो नहीं चाहता है पार्टी बनना, उसको हम सिर्फ नाम के लिए डिफेंडेंट बना देते हैं. तो जो डिफेंडेंट होगा ऑलरेडी, जो डिफेंडेंट है, जो रियल डिफेंडेंट है, उस केस में वो जो को डिफेंडेंट है उसके साथ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. उसका इंटरेस्ट और को डिफेंडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, ऑपोजिट होगा, इन कॉन्फ्लिक्ट होगा. Whenever in a suit a person has been made the defendant and he has a conflict of interest with the co-defendant and jointness of interest with the plaintiff, he will be called as a Performa Defendant. Such defendant ought to have been made a co-plaintiff, but since he is unwilling to become the plaintiff, he is made the defendant. उसको कायदे से तो प्लेंटिफ बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसको प्लेंटिफ बनाया जाए, उसको पार्टी बना जाए, उसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बनाएगा. Example: A and B jointly owned a house. Once C has dispossessed them from the said house, here if A alone files a suit against C, then B can obstruct the execution of the decree, but B is not willing to become the plaintiff in the suit. To handle this situation, A can make B a party in the suit as proforma defendant, but not as plaintiff. The same example I gave you when I was explaining you this term, proforma defendant. Subject matter can be of three types: personal, proprietary, pecuniary. Proprietary subject matter, a suit in which the subject matter is related to some property or any right related to the property. Suit related to property or any right related to the property is called the proprietary subject matter. For example, suit for the declaration of a title with respect to some property. आप किसी घर का टाइटल की डिक्लेरेशन के लिए आपने सूट फाइल किया, सो दिस हाउस इज अ प्रॉपर्टी, दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, का सूट आपने फाइल किया है. सूट अगेंस्ट न्यूसेंस अपॉन सम प्रॉपर्टी, कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कोई न्यूसेंस कॉज कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, पीसफुल पोजेशन को आपके पीसफुल पोजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, सो that is a suit against. Now that is also related to the property. Suit against trespass into some property, etc. are the examples of the proprietary subject matter. Pecuniary subject matter, any suit in which the claim is in the form of money, the subject matter is pecuniary. जहां पे money claim है उसको हम pecuniary subject matter बोलते हैं. Personal subject matter, any suit in which the subject matter is neither proprietary nor pecuniary will be personal subject matter. Examples: right to speech, right to privacy, contractual claims related to the performance of some service, a claim related to some relationship, etc. So these are the examples of personal subject matter. There is an important note here. In order to find out the subject matter of the suit, one has to examine the cause of action as well as the relief claimed. Cause of action, if you will examine the cause of action and the relief that you are claiming, the relief that you are seeking from the honorable court, so by examining the cause of action and the relief claimed, the relief that you are seeking from the honorable court, you can get the subject matter. You can find out the subject matter. अगर आप cause of action को और relief को, जो आपने relief मांगी है कोर्ट से, अगर आप उसको examine करोगे इन दो चीजों को, then you can find out the subject matter. तो आप subject matter को ढूंढ सकते हो. What is the difference between the cause of action and the subject matter? Cause of action is something which revolves around the subject matter. It is not the same as the subject matter, rather it is the existence of a right with respect to the subject matter and the violation of that right. Cause of action is the existence of a civil right with respect to a subject matter and the violation of that right. Cause of action क्या होता है? आपका civil right है, वो civil right किसके relation में है? That is related to the subject matter. Legal capacity है आपकी with respect to a subject matter. So the existence of a civil right with respect to a subject matter, that is the cause of action, and somebody has violated that legal right. Another person has infringed that civil right with respect to the subject matter, so that is called the cause of action. Cause of action is something which revolves around the subject matter, जो कि subject matter के इर्द गिर्द घूमता रहता है. It is not the same as subject matter, rather it is the existence of a right with respect to the subject matter.
Subject matter and cause of action, these are two different things. These are two different terms and these are two different concepts. Subject matter is now cause of action is something that revolves around the subject matter. It is not same as a cause of action. Subject matter, it is the existence of a right with respect to the subject matter. Cause of action is the existence of a civil right with respect to the subject matter and the violation of that right. Right? Relief and remedy. Remedy is the term used in the substantive law, but the moment the remedy is claimed from the court in the proceedings, for example in the suit, it will be called as a relief. Remedy is used in the substantive laws, whereas the moment this remedy is claimed or is sought from the honorable court, from the honorable civil court in a civil proceeding, it will be called as relief. जैसे ही आप civil suit में उस मांगते हो उस remedy को, तो उसको relief बोला जाता है. Title, it is the legal capacity to a party in which he is related to the subject matter of the suit. In simple words, title is the legal capacity with respect to the subject matter. For example, Rahul has filed a suit against Oja for the declaration of title of the house. Here the subject matter is the house. Cause of action is the right to title and the denial of this title. Relief is a declaration of title and title is the ownership. Both Rahul and Oja, they have a title of ownership. यही example मैंने आपको दिया था. A and B, I was in that example. मैंने A और B के बीच में रखा था and here Rahul and Oja. Right? So the legal capacity with respect to the subject matter is the title. Matter in issue. In a suit, the legal relationship claimed by a party with respect to the subject matter will be called as his title, whereas the process or the fact by which he has acquired the said legal capacity will be called as the matter in issue. The process or the fact by which you have acquired the title or the legal capacity with respect to the subject matter is called as matter in issue. जिस प्रोसेस से या जिस फैक्ट की वजह से आपको टाइटल मिला है, उस प्रोसेस को या उस फैक्ट को मैटर इन इश्यू बोलते हैं. एग्जाम्पल, राहुल सेज दैट ही हैज गॉट द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सक्सेशन. Oja allegedly said to him that he had purchased this immovable property from the father of Rahul. Rahul says he is the owner of the said property as he has succeeded to his father's property. Here the legal relationship that he claims with respect to the said property is that of being the owner and therefore the title is the ownership. Title क्या है? Ownership है. यही example मैंने आपको दिया था. But he has acquired such ownership due to his succession. So, matter in issue is the process or the fact by which you have obtained the title. You have obtained the legal capacity with respect to the subject matter. जिस process से, जिस fact की वजह से आपको title मिला है, उसको matter in issue बोलते हैं. और इस example में राहुल को ownership मिली है. He is alleging that he has received or he has obtained the ownership through succession. So succession is the process, succession is a fact by which Rahul obtained the ownership, Rahul obtained the title, the legal capacity with respect to the subject matter to his father, and hence the succession is the fact by which he got the ownership and it will be called as the matter in issue. Similarly for Oja, ownership will be the purchase, ownership will be the title and purchase will be the matter in issue. Matter in issue is the fact and the process that provides you the title. Important note. Title is the legal capacity with respect to the subject matter and the answer to the question as to how you acquired the title will tell us the matter in issue. Title is the legal capacity with respect to the subject matter and the question that how did you acquire that title or how did you receive, how did you obtain, how did you get that title will give you an answer or will tell you the matter in issue. इस क्वेश्चन का आप टाइटल किस तरीके से आपको टाइटल मिला, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैटर इन इशू बता देगा. सो द फैक्ट और द प्रोसेस बाय विच यू रिसीव्ड, यू ऑब्टेन्ड द टाइटल, द लीगल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर विल बी द मैटर इन इशू इन द सूट. राइट, तो ये सारे टर्म्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक हैं, जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं सीपीसी में जो हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं आएंगे
तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाओगे. एंड दैट वाज द रीजन दैट आई टुक द इम्पोर्टेंट टर्म्स for today's class and I tried my level best to make you understand all these important terms. अभी मैंने फटाफट बता दिया, जल्दी जल्दी से मैंने पढ़ लिया. रीजन बीइंग कि मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं एंड यू कैन रीड ऑन योर ओन from the notes that I have given here, right? Thank you so much for watching.